This is Milan and welcome to my YouTube channel and welcome to my DIY videos। तो आज मैं आप लोगों के सामने जो DIY प्रोजेक्ट लेके आई वो बहुत ज़्यादा अंडर बजट है। You can easily find it at home। Before we start the video, please do subscribe my channel। Let's get started। For this DIY, you need a container. You can recycle any dabba at your home. Then choose any outline of drawing. Now put it inside the container. You can use tape or roll t-shirt and put it inside the container. I am using tissue paper here. Now using the black permanent marker, trace out the drawing. Take your time and the process is really easy. बस trace करते जाना है and once you have done, take out the material जो आपने इसको set करने के लिए अंदर लगाया हुआ था. And see, this is how it looks. अगर गलती से कोई मिस क्रिएट हुआ है तो आप कॉटन बर्ड से इसको रिमूव कर सकते हैं. Now here I'm using acrylic color. Now paint inside the container. तो इसे अच्छे से पेंट करना है. ये प्लास्टिक का जार था तो इसको पेंट होने में काफ़ी टाइम लगा. मैंने इसको ऊपर 3 से 4 कोट्स पेंट के लगाए. फर्स्ट कोट के बाद ये कुछ ऐसे लग रहा था. फिर मैंने इसको ऊपर किए 3 से 4 कोट्स अलग से. You can see it looks so aesthetic and yet it was super easy to make. This has to be my favorite DIY. मैं ना ऐसा एक और बनाने वाली हूँ for sure because एक तो बहुत ही easy था बनाने के लिए. Everyone in my house loved it. You can apply the same idea on the glass के jars. So guys, if you like my video, do subscribe my channel, hit that bell icon. See you in the next video. Bye bye.